वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पार्ट 1 में दुबई गार्डन ग्लो के बारे में डिटेल वीडियो बताया था। आज मैं आपको बाकी के अट्रैक्शंस में दिखाने वाली हूँ और हमने क्या फ़ूड एंजॉय किए थे, उसके प्राइसेस क्या थे, फ़ूड कैसा था, उसका कंप्लीट आपको रिव्यू इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे साथ में ये एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, घर बैठे बैठे वीडियो का मज़ा लें। और अगर आप दुबई आने का प्लान करते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस अट्रैक्शन पे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा अट्रैक्शन है, उसके प्राइजेस क्या है, क्या लोकेशन है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 मेरे चैनल पे जिस रीसेंट अपलोड में है वो देख लीजिएगा। और इसके टाइमिंग है शाम 5 बजे से लेके मिडनाइट तक, ये वीकेंड पे ओपन रहता है और रेगुलर डेज़ पे 11 बजे ये बंद हो जाता है। इसके टिकट चार्ज जैसे 85 दिरहम अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 65 दिरहम है। और ये लोकेशन इसका जबील पार्क नियर गेट 6 एंड 7 और अल जफ़िया मेट्रो स्टेशन के पास ही आता है। दुबई गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है फैमिली के लिए। ये गार्डन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गार्डन है, ग्लो इन डार्क। आपको मज़ा आएगा जब आप रात के समय आप आएंगे। यहाँ पर एकदम पीसफुल पार्क है, हर जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे। पार्ट 1 भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको ग्लो गार्डन की, वो ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत ही यूनिक से इतने प्यारे अट्रैक्शन हैं। उसको वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि हाफ पार्ट है, पार्ट 1 भी देखना, ये पार्ट 2 है और इसमें वो अट्रैक्शन कवर करने वाले हैं जो हमने उस वीडियो में नहीं दिखाए थे। तो मैं ले जाके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ग्लोइंग सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा, आई कैचिंग सा, प्यारा सा गार्डन। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। इफ़ एनीवन इज़ न्यू ऑन my channel, you're most welcome. Must subscribe the channel and also share to your loved ones. तो आपको मैं ले जाके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। और आप जब देखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मल्टी कलर की लाइट्स और डेकोरेशन और म्यूज़िक। अरे भाई, डेकोरेशन और म्यूज़िक और लाइट्स किसको नहीं पसंद होते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हर एक प्लेस पे बहुत अलग अलग से अट्रैक्शन बने हुए हैं और बहुत ही यूनिक सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही यूनिक से व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो आप बने रहिए। चलिए मैं ले जाके आपको दिखाती हूँ। It's your time, we're right about midday or in the night. Don't be shy, you can try, but you can never take the back. Oh, enough, you can battle. It's some movement, so needed. Cultivation and beating, let them say what they want. But never me, they do you, they do them. But love wins in the end, again and again. You can transcend, some movement, so needed. Cultivate and beat it. It's your moment. You know only you can do it. If you push up, they can't stop you. You know they can't stop you. It's your moment, and you gotta make it. It's your moment. You know only you can do it. If you push up, they can't stop you. You know they can't stop you. It's your moment, and you gotta make it. It's your time, do it right. In December or July, don't be shy, you can fly. You never break your stride. You're the one, the work is never done. It's a movement, so lead it. Cultivated and feed it, let them talk all they want. But never can see to stay true, stay dead, cause love is the end. It's your moment. You know only you can do it. If you push right through it, they can't stop you. You know they can't stop you. It's your moment, and you gotta let it. It's your moment. You know only you can do it. If you push right through it, they can't stop you. You know they can't stop you. It's your moment, and you gotta make it.
It's a movement so needed. Cultivate it and feed it. Cultivate, feed it. It's a movement so needed. Cultivate it and feed it. It's your moment. Yeah, you know you want it, you can do it. If you push up to it, they can't stop you. If they can't stop you, it's your moment. And you gotta make it, it's your moment. Yeah, you know you want it, you can do it. If you push up to it, they can't stop you. You know they can't stop you, it's your moment. And you gotta make it last. It's our moment. Yeah, you know we can do it. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. They can't stop us. They can't stop us. It's our moment. Come on. It's our moment. Yeah, you know we can do it. We'll push right through it. They can't stop us. No, they can't stop us. It's our moment. And God make it last. हम जब कंप्लीट गार्डन घूम के थक चुके थे तो हमने यहाँ पर फूड स्टॉल थी, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए थे, वहाँ पर हमने फूड इंजॉय किया। तुर्किश अदाना कबाब ज़ाफ़रान राइस के साथ में और ईरानी चिकन टिक्का वगैरह सैलड्स के साथ में हमने इंजॉय किया। यहाँ पे टर्किश ब्रेड और इसके साथ में बच्चों ने चीज़ बॉल और फ्राइज़ ली। एक एक की कॉस्ट थी 150, 100, किसी की 70 दिरहम कॉस्ट थी एक एक फूड की। और यहाँ पर आइसक्रीम्स और काफ़ी कुछ आपको कॉटन कैंडी, बच्चों के लिए टॉयज़, गेम्स वगैरह जैसा जो कुछ लेना चाहते हैं, आइसक्रीम्स। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं गोल्ड प्लेट पे लाइव आइसक्रीम बना रहे थे। और फ्रूट्स आइसक्रीम चाहिए या आपको चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, जो भी फ्लेवर में वो बना के देते हैं। ये देखिए 30, 40 एंड 50 इसकी कॉस्ट थी। ये आपके सामने लाइव आइसक्रीम बना के दिखाते हैं कि हम वो किस तरह से बना रहे हैं। जैसे उन्होंने फ्रूट को पहले चॉप किया है,
फ्रूट को चॉप करने के बाद उसमें इन्होंने कोई शुगर नहीं ऐड किया है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं इन्होंने मिल्क इसमें बस ऐड किया है और इसको इतनी देर तक इन्होंने बीट किया है कि ये खुद ब खुद कोल्ड प्लेट से आइसक्रीम फ्रोज होके आइसक्रीम बनने लगती है। तो उसको इतना वो चॉप करते हैं, फिर उसको फैला के उसके रोल बनाते हैं और वो रोल को फिर वो सर्व करते हैं। आपको गार्निशिंग जो भी सॉस या चाहिए वो आप ऐड करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी आपको मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन, डिटेल और कंप्लीट रिव्यू, प्राइसिंग वगैरह, कॉस्ट सब कुछ मिल गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा अपकमिंग ब्लॉग भी अब देखेंगे कि हम दुबई में इसके बाद हम कहाँ गए थे। हमने बहुत सारा डेस्टिनेशन जो था, टॉप अट्रैक्शन सब कवर किया। उसको चैनल पे आप देखेंगे तो उसका ब्लॉग भी आपको मिल जाएगा। बुर्ज खलीफा वगैरह का भी अब कुछ जगह रह गई है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको ये ज़रूर पसंद आएगा मेरा ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।